Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English study. Now we discuss next 20 critical comments on William Shakespeare today. तो फ्रेंड्स आज हम क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर पर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अर्थात अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा जिस तरह तक अभी तक सपोर्ट करते आए हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्रिटिकल कमेंट क्या है? आई हैव ग्रेट रीजन टू बी content. I have great reason to be content, for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his depth. तो बाई किसकी क्रिटिकल कमेंट है? ये जॉन कीट्स की है, बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट शेक्सपियर इज अ savage with sparks of genius which shine is horrible night, by Voltaire. नेक्स्ट क्रिटिकल कमेंट है शेक्सपियर fault is not the greatest into which a poet may fall. It merely indicates the deficiency of taste, by Dennis Diderot. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कमेंट है इंग्लैंड इज ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, बाय फ्रांसिस मेयर्स। नेक्स्ट हनी टंग्स शेक्सपियर, बाय फ्रांसिस मेयर्स। नेक्स्ट one of the greatest geniuses that ever exist, by Horace Walpole. One of the greatest geniuses that ever exist, by Horace Walpole. Next comment is Shakespeare the nearest thing in incarnation to the eye of God. Shakespeare, the nearest thing in incarnation of the eye of God, by Laurence Olivier. Next है what needs my Shakespeare for his, यहाँ ई है आरी, for his honored ones, the labor of an age in filed stone, by John Milton. Next, the greatest genius that perhaps human nature had yet produced, by S.T. Coleridge. The greatest genius that perhaps human nature had yet produced, by S.T. Coleridge. Next, Dante and Shakespeare divide the modern world. Shakespeare divide the modern world
between them there is no third by T.S. Eliot. Dante and Shakespeare divide the modern world between them. There is no third by T.S. Eliot. Next, Shakespeare waiting, frustrating, surprising, and gratifying by F. Fitzgerald. By F. Fitzgerald. Shakespeare waiting, frustrating, surprising, and gratifying by F. Fitzgerald. Next comment, friends. He was the man who of all modern and happy and perhaps ancient point had the largest and most comprehensive soul. By John Dryden. He was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. By John Dryden. By John Dryden. Next comment is I could say that Shakespeare surpasses literature altogether if I knew what I meant. By Virginia Woolf. I could say that Shakespeare surpasses literature altogether if I knew what I meant. By Virginia Woolf. शेक्सपियर was लर्न कराना है. नेक्स्ट है शेक्सपियर was the great one before us. This place was between God and despair. Why? Eugene Ionesco. By Eugene Ionesco. Next है I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me. By Charles Darwin. Next, Shakespeare magic could not cupid. Shakespeare magic could not cupid be. By John Dryden. So dear friends, ये क्रिटिकल कमेंट्स थी जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड थी. तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और फ्रेंड्स, अधिक से अधिक नए लोग भी अधिक से अधिक सपोर्ट करें. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह की वीडियो लेके आएँ. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.